हाय गाइस, दिस इज हितेन तेजवानी एंड आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया. पीपल हैव गिवन मी सो मच लव सिंस माय इनिशियल डेज ऑन टीवी. नाउ आई एम हियर टुडे टू talk about what is going on in all our lives. I don't know how everybody is coping with the pandemic, The whole idea about this thing, the whole talking is about pandemic, how it has affected us, how, every routine, जो हमारा एक सेट रूटीन था, हमारी एक सेट लाइफ थी, वो कैसे बदल गई है. सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे बच्चों की भी. आवर किड्स ऑल्सो, दे आर नाउ डूइंग एवरीथिंग ऑनलाइन. सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. ऑनलाइन स्कूल्स हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, ऑनलाइन टीचिंग्स हो गई हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. इट इज़ जस्ट अमेजिंग. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें देखकर नहीं, बल्कि हमें उन्हें देखकर सीखना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से एडजस्ट किया है इस पूरे पैंडेमिक में. आई लुक एट देम doing their online school, they were doing their online classes, and I'm like, my God, these guys have just adapted to it and adjusted to it so well. I'm sure all the parents out there, वो भी यही सोच रहे होंगे और उन्हें भी यही लगा होगा. इनिशियली सबको डर लगा होगा कि क्या होगा, कैसे होगा ऑनलाइन स्कूल, मतलब कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी. बट in a way it has helped them so much because it is one-on-one. And I'm seeing a lot of difference in my kids. मतलब I'm sure स्कूल में भी वो इतने ही स्मार्ट रहे होंगे, बट यहाँ वन ऑन वन में द मोमेंट द टीचर इज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो तुरंत यहाँ से जवाब देते हैं विदाउट एनी हेल्प. ऑफ कोर्स अराउंड फॉर अ वीक और सो मुझे नज़र रखनी पड़ी, मुझे देखना पड़ा कि क्या हो रहा है, व्हाट आर दे लर्निंग, व्हाट इज द टीचर सेइंग. बट नाउ वी डोंट नीड टू कीप एन आई. दे आर जस्ट, as I said, they have adapted it to it so well. I mean, इतनी अच्छी तरह से अडेप्ट किया है, एडजस्ट किया है इतनी अच्छी तरह से कि इट इज़ जस्ट अमेजिंग. पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि सब एवरीबडी विल हैव टू बी इनसाइड, indoors. Even kids were asking me that why can't we go out and play, because for kids not going out is something which they also don't understand. But they saw this, it is a lockdown and pandemic hai. It is not safe to go out, otherwise nobody stops them from playing. Kids have to go out and play, and so we did what we did. घर में ही मैंने स्टार्ट कर दिया उन लोगों के लिए. I went online. I showed them a couple of courses, a couple of music classes, piano classes. So yoga, of course my wife Gauri was doing every day, but we did yoga going online, and I used to make them see this, and they also got into this. They go online, they see the kind of exercises which they want to do on that particular day, because that gives us a choice of doing what we want to do. कभी कभी ऐसा होता है, I don't want to do legs today, so then there are other exercises. तो ऐसे ही I showed them how you can do according to your body types or according to what exactly you want to do today. Whatever classes they wanted to do, we noted down that they want to do piano classes, or they want to do some music, or they want to read a book. So all that options were given to them. Timings were decided, and first was of course studies, what they have to study. Then the timings were decided that in the evening you have to work out. Between that you have time to do your classes. You can do your piano classes, or you can probably buy a book and study. In a way, everything could be done. Nothing was disturbed. They did everything together, and they were happy, content, and in a way they were learning also something. They were learning a new skill also, which was interesting, because the whole idea was that they wanted to do that. At the same time they studied also, at the same time they did the exercises also, at the same time we cooked also, at the same time we ate together also, and at the same time we went to bed, and next morning the same thing. Well, like everybody else, all there were groups formed and everybody was worried. सारे parents घबराए हुए थे और सब सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, because there was still क्लैरिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है अबाउट अवर किड्स स्टडीज़ एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग. हाउ डू वी टेक इट फॉरवर्ड?
Then, one fine day we just happened to go online and we found out about this initiative which is called Keep Learning, which is an initiative by the Times of India and powered by Byju's. ये initiative में, we got to know that this particular initiative is designed to help parents and teachers and of course all the students also to navigate the shift to online learning, teaching. Okay, the parents specifically get to understand and participate in the following features of the initiative. सबसे पहला जो है change in the syllabus. ये पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ, तो सिलेबस में भी चेंजेस आए so that it is easier for kids to understand online and easier for everybody to understand. Addressing concerns with digital and screen time. I'm sure everybody is concerned. सबको ये ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा स्क्रीन टाइम कर रहे हैं या ज़्यादा डिजिटली इनको ज़्यादा डिपेंडेंट कर रहे हैं. बट this is what it is and this is the future. Everybody, I'm sure फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऐसे कुछ कोर्सेज आपके बच्चों को करने होंगे जो probably they are available online and they are probably कहीं बहुत दूर है जहाँ आपको अपने बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं, but you can enroll it online and they can learn it or they can educate themselves online. So of course definitely वो उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा for screen time और digital whatever you call it, कि डिजिटल और स्क्रीन टाइम के बीच का जो कंसर्न है आपका तो वो तो होगा ही होगा. Everything will be online in future. Third one, I would say demystifying the National Education Policy 2020. Education policy में बहुत कुछ changes हुए, क्या है कैसा है online से. I'm sure आगे चल के there will be exams जो online होंगे. Of course स्कूल नहीं जा सकते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे, उसके भी तरीके होंगे कैसे होते हैं क्या होते हैं. ऑल दैट इज़ मेड ईजियर एंड पेरेंट्स गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. फोर्थ वन इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेरेंटिंग चैलेंजेस ड्यूरिंग कोविड टाइम. अब आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्या करें, दे आर ऑनलाइन, दे आर स्टडिंग एवरीथिंग एंड उसके बाद में बट बिकॉज दे आर स्टडिंग ऑनलाइन, बिलीव यू मी, बहुत सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं बिकॉज फॉर देम इट इज़ 1-on-1. जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि 1-on-1 जब मिलता है आपको तो वो ज़्यादा रजिस्टर होता है एंड आई बिलीव कि उससे जैसे मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस तो आता ही है टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम एट द मोमेंट. That was the fourth one. Yeah, fifth, as from blackboard to digital screen, enabling online education. Yeah, हमें आदत है कि हम blackboard पे देखते हैं, blackboard पे मिस लिखती है and then we copy it and then we make note of it. But this has all become online. It is absolutely the same. Only the thing is there is no online here, there is no board here, there is everything is online. Okay parents, so guys and everybody, go check out, visit www.timeskeeplearning.com जहाँ आपको इस इनिशिएटिव के पूरे कंपोनेंट्स के बारे में पता चलेगा जो है कंटेंट ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्कशन विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, one-on-one connect with experts and discussion forums wherein there are forums you can discuss everything. There are experts who come online, they can guide you through online education and everything. There is discussion about the subject matter. अगर आप लोगों को कुछ doubt है तो experts हैं who will discuss and they will guide you through everything. And of course definitely the topics which I just said, they will be covered on content on online education. So visit www.timeskeeplearning.com.